हेलो एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग यूट्यूब एंड आज का वीडियो थोड़ा अलग है. आई एम स्टैंडिंग इन द स्टूडियो विद बोथ माय बाइक्स एंड लिटिल बिट ऑफ स्टफ इन द बैकग्राउंड एंड आई होप माय ऑडियो इज क्लियर. कैमरा काफ़ी दूर है. तो टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट पावर कमांडर्स. तो बेसिकली अब तक ज़्यादातर ऑन माय चैनल यू गाइज हैव ओनली सीन व्हीलीज, टूर्स, गाड़ी कूटम काटी, थोड़ा बहुत सर्विसिंग एंड ऑल. But what you all might not know or may know if you guys follow me on Instagram के I love doing most of the stuff, 99% of the stuff to my bikes. चाहे वो valve timing रहने दो, modifications रहने दो, everything I do it myself. I love doing it because well शौक है भाई बचपन से चीज़ें खोल लेके कर लेके ये वो करने का. तो anyways that's why I made this place. घर के अंदर एक रूम बनाया था कि आराम से AC डाल लेके अपन काम करेंगे बोल के. तो anyways आज का topic is going to be a very controversial नहीं बोल सकते. a topic a lot of people don't have much knowledge about, a lot of people have misconceptions about, and a lot of people have shitloads of questions about. It's going to be about fuel mapping and power commanders. तो वीडियो दो पार्ट्स में करेंगे अपन के. फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद व्हाट एग्जैक्टली इज अ पावर कमांडर एंड व्हाई वी नीड अ पावर कमांडर एंड डू वी नीड अ पावर कमांडर, एंड देन फॉलोड बाय व्हाट एग्जैक्टली वी हैव आई हैव ऑन बोथ माई बाइक्स एंड व्हाट आई हैव बीन यूजिंग. इतने दिन से ये वीडियो काफ़ी दिनों से पेंडिंग में था. एंड बिफोर वी स्टार्ट, नो आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड और दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय डायनोजेट और पावरट्रॉनिक्स और एनी ब्रांड एज सच. ये अपन अपने उससे आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करने के वास्ते. फर्स्ट ऑफ ऑल द एनवायरनमेंट इज वेरी प्रेशियस, यू ऑल नो. एंड गाड़ियों में नाउ द यूरो 4 नॉर्म्स हैव कम इन. BS4 जो बोलते हैं अपने पास से, इट्स बेसिकली रिप ऑफ दैट. तो विद BS1, BS2, BS3, BS4 हर स्टेज पे एवरी मैन्युफैक्चरर हैज़ to meet quite a lot of limitations and specifications when it comes to noise or releasing pollutants into the environment. You all know we love these machines, you know, but end of the day they do release a lot of harmful gases into the atmosphere. Of course with the catalytic converters and all काफ़ी कम है, but still. So उसकी वजह से as the laws keep becoming more stringent and people keep pushing towards electric vehicles, परफॉर्मेंस हल्लू हल्लू एक बैक सीट ले रहा, बिकॉज दे हैव टू बी मोर कॉन्शियस अबाउट ट्यूनिंग द बाइक टू नॉट एमिट अ लॉट ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू द एयर एंड यू नो नॉट क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइज पोल्यूशन. इसलिए यू सी द न्यूअर बाइक्स दे मोर साइलेंट. स्टॉक पे दे आर वेरी वेरी साइलेंट. चाहे नई R1M ले लो आप, नए कावासाकी Z900, ZX, एनीथिंग 2018 2019 के बाद की गाड़ियाँ ज़रा पावर वाइज भी थोड़ा कम फील हो रहा है. यू नो बेसिकली ज़रा गला दबा दिया जैसा फील होता. So basically that's where power commanders and you know aftermarket ECUs come in. Power commander बोल रहा हूँ because a lot of people use that term, but power commander is actually a brand. So fuel and ECU remapping comes in. So what exactly do we do now in US and a lot of countries where the laws are stringent? Fuel mapping and everything, it's considered only for track use. If you see on a lot of their websites, a lot of stuff, it's clearly mentioned that specific things are for race use only. I mean, they're not road legal. But certain applications है जहाँ पे they are road legal, wherein आप उतना भी pollution नहीं release कर रहे, आप उतना भी you know चीख पुकारा नहीं कर रहे गाड़ी का. तो I hope you guys get the point. So what exactly does a power commander do? चलो आप गए शोरूम पे, you got yourself a new 2019 example ZX10R उठा लिया आप. You don't like the stock exhaust. And there are shitloads of aftermarket accessories available for your bike. Manufacturer of course stock चीज़ां डालता because they have to meet certain homologation and other rules. तो what do you do? The first thing गाड़ी लेते ही अपने को तारा boom boom sound ना बोल के people go for a exhaust, either a slip-on exhaust or a full system. Depends on the bike. थोड़े गाड़ियों में slip-on से cat eliminate होता था catalytic converter, थोड़ी गाड़ियों में नहीं होता. So you have to go with the full system. थोड़े गाड़ियों में आप slip on से cat eliminate हुआ तो भी you go for high performance headers जिसमें resonators और bend pipes नहीं है, for a more freer flowing experience. So basically गाड़ी की जान दो चीज़ों से चलती, जो उसका जैसा अपनी खाने और सांस लेने से चलती. The same way
motorcycle engines or any engines for that fact worked on fuel and air. So it's all about the air fuel ratio and the air fuel mixture that goes into the bike. So stock bikes, of course, they have a lot of newer technologies of जैसा wide band O2 sensors है, ये वो है, to compensate slightly for the difference in the air fuel ratio. For example, you put a free flow exhaust, आप cat delete कर दिया आपकी गाड़ी का, you get a free flowing air filter. So basically there's more air flowing into the engine. So but the bike has to compensate by providing more fuel. Otherwise गाड़ी का mixture lean हो जाता. Lean is more air, less fuel. तो उससे गाड़ी ज़रा overheat होती, power of course थोड़ा कम हो जाता, and it starts feeling rough. Some cases में it's not necessary कि lean हो, certain power bands पे गाड़ी rich भी हो जाती है, as in there's more fuel, less air. So you know, basically it's all about creating a power curve. We'll get to that जैसा मैं लैपटॉप गाड़ी को कनेक्ट करता हूँ इंटरसेप्टर को और आप लोगों को बाकी की टेक्निकलिटी भी समझाता हूँ, but I am trying to explain to you guys in the most layman and simple terms possible. So what exactly does a power commander do? It helps you fine tune the air fuel ratio of the bike. Not exactly the air ratio, but it helps you control the flow of fuel into the bike. तो of course काफ़ी ज़माने तक अपने पास कार्बोरेटेड बाइक्स थे. कार्बोरेटर के गाड़ियों पे of course सिंपल रहता, जेट्स रहते, स्क्रूज रहते, आप मैन्युअली एडजस्ट कर ले सकते हो, वो एक अलग सरका तरह है, बैलेंसिंग द कार्बोरेटर्स एंड ऑल. बट ऑन न्यूअर एंड मोर मॉडर्न बाइक्स यू हैव अ लॉट ऑफ एडवांस स्टफ लाइक इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड फ्यूल डिलीवरी एंड इग्निशन, फ्यूल इंजेक्टर्स है. थोड़े गाड़ियों में जैसा अपनी R1 में है, यू हैव प्राइमरी इंजेक्टर्स, सेकेंडरी थ्रॉटल बॉडी, काफ़ी चीज़ें रहते. सो विद साइंस एंड विद टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गया मसला, but at the same time fine tuning has also become quite easy if you have the right tools. So basically you need a fuel management system. There are two types of them. You either replace your whole ECU, गाड़ी का जो स्टॉक ECU रहता निकालो, दूसरा ECU डालो, या आपका स्टॉक ECU निकालो, भेजो, फ्लैश कराओ और वापस लगा लो. Disadvantage of that is कि in case you need to revert to stock settings for some reason या गाड़ी आपकी सही नहीं चल रही, then it's a whole different and lengthy procedure. और अगर ECU डैमेज हो गया, वारंटी कुछ भी खींचियाँ रह सकते. This is where the piggyback systems come in. तो piggyback का मतलब है कि उन्हें आपकी गाड़ी के existing फ्यूल सिस्टम के और ECU के ऊपर, ECU is the one which controls everything on the bike, उसके ऊपर से कनेक्ट हो जाता है, creating like a bypass. So it's basically instructing your bike कि कहाँ पे फ्यूल ज़्यादा छोड़ना, कहाँ पे फ्यूल कम छोड़ना over the stock setting. So you already have your stock zero map जिसको बोलते हैं, it's called a zero map, जो कंपनी से आता, उसके ऊपर आप फ्यूल कहाँ ऐड करना, कहाँ कम करना. That's what these fuel controllers basically do. You have Dynojet for power commanders, you have Bajaj का ZFI unit. Then of course you also have the Race Dynamics का Powertronics ECU, which I have currently on my Interceptor. तो अब तक I've been using Dynojet products. I haven't used any Bajaj products till now. On my CBR 650, on my CB1000, on my FZ1 पूरों पे PC5 और PCFC था. So let me just break down के fuel management में भी basically अगर सबसे basic structuring करें तो there are two types. Basic structuring भी करे, so you get either standalone fuel management or you also get fuel management plus ignition timing management. तो fuel management में जबकि आप air fuel का ratio control कर रहे हैं plus minus करके, with the ignition module you can control the ignition timing के spark कब होना, कब ज़्यादा होना, कब spark plus current ज़्यादा जाना, कब कम जाना. So basically for our use अपने लिए क्या सही रहता. A lot of people ask me कि PC5 लेना या PCFC लेना. I've used the PCFC on most of my bikes. PC5 में सिर्फ CB पे यूज़ करा. So if you go for a PCFC, basically Dynojet के products है ये. That's just a standalone fuel management system. उसके अंदर आपको सिर्फ एयर फ्यूल रेशियो चेंज कर रहे हैं आप. You're not messing anything with the ignition timing of the bike, and you don't need to unless you're doing some really high performance. जैसे आप high lift camshafts डाल रहे, आप piston के sizes change कर दे रहे. You know, when you're doing all that, you need to change the air fuel ratio as well as the ignition timing both. तो उतना advanced अपने उतना पैसे डाल के, you know, whereas where a PC5 comes in for quite a lot of cost, उसके fraction of cost में आपको PCFC मिल जाता है. And then again, if you buy a PC5, you need to buy a standalone, उसका अलग एक ignition module आता, फिर उसके साथ आपको अगर quick shifter हो तो quick shifter का अलग मिलता है, तो cost काफ़ी बढ़ जाता है. वो performance gains, yes, they are there, they are noticeable, but उतने पैसे डालना उतने performance gains के लिए, and when you're not exactly going to be, you know, ripping the bike on the track, आप खाली KBR का एक राउंड मारना है, PC5 ignition ये वो सब डाल लेता हूँ बोले तो there's no use. तो
पावरट्रॉनिक्स की काफ़ी अच्छी चीज़ ये है कि देयर यूनिट comes at a very reasonable price and they have the ignition timing as well as fuel management built in, ताकि कल के दिन अगर आप गाड़ी में कुछ चेंज भी कर रहे हो, so it's basically future proof. ऐसा नहीं है कि आप for example if you go with Dynojet you get a PCFC, in case later on you change something else in your bike, ज़रा engine के अंदर जाके आप ये वो change कर रहे, so it's not like you have to spend more to buy say अब PCFC पूरा बेकार हो जाता है, you have to remove that, get a PC5, get an ignition module, फिर क्विक शिफ्टर का मॉड्यूल अलग से लो, सेंसर अलग से लो, ऑल दैट, वो सब झंझट अपने को पावरट्रॉनिक्स में नहीं है. तो आई होप यू गाइज गॉट द बेसिक साइंस राइट एंड आई थिंक आई कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स. नाउ हाउ एग्जैक्टली डज इट कंट्रोल द एयर फ्यूल मिक्सचर एंड व्हाट एग्जैक्टली हैज टू बी कनेक्टेड एंड ये सब मैं आपको अब भी ज़रा गाड़ी खोल लेके लैपटॉप कनेक्ट कर लेके बताता हूँ. सो लेट्स बिगिन. आप ना वंडर कर रहे होंगे R1 पूरी खुल के कहीं को रखी हुई है, एवरीथिंग्स जस्ट ओपनड अप ऑन द बाइक, पूरा थ्रॉटल बॉडीज ये वो हर चीज़, फ्यूल रेल्स, एवरीथिंग्स ओपन बिकॉज आई वांटेड टू क्लीन एवरीथिंग, सर्विस इट एट होम एंड वाल्व टाइमिंग सब चेक करके फिक्स एवरीथिंग बैक. तो उसके भी काफ़ी डिटेल्ड वीडियोज़ आने वाले हैं, बट यप टाइम ही नहीं मिल रहा भैया काम से. तो नाउ मूविंग ऑन टू आवर इन्फॉर्मेटिव टॉपिक. तो मेन रीज़न ये है कि ये चीज़ में आई हैव डन क्वाइट लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग एंड यू नो छेड़म छाड़ी myself, so I just want to share all my knowledge with you guys. So first of all let's move it towards the bike. ये जो दिख रहा है आपको, this right here is the module. Basically कोई भी मैन्युफैक्चर का ले लो आप, this is the POWERCOMMANDERS ECU sold by the guys in Bangalore. उनकी लिंक विंक हर चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ आप लोगों को, अलॉन्ग विद द अदर प्रोडक्ट्स यू कैन गो विद, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे. तो एनीवेज, so basically design is almost same for most of the units. You just get this one unit which has a master harness which goes and connects into the various parts of the bike. There's no product unboxing here because this is not a product unboxing video. तो you can see ये पूरे जो wires ज़रा सामने से दिख के जा रहे, वो it's actually my fault because the instructions say that the instructions say that the module has to be mounted onto that side of the bike, but उधर अपना म्यूजिक सिस्टम का एम्पलीफायर लगा हुआ है, so I had no other place, so I mounted it here. Apart from that you also have two ignition actuators, एक ये जो आपको अंदर दिख रहा और एक I've placed it on the bike right here. So those two are ignition actuators. काफ़ी बड़े है, so that's something I don't like, we'll discuss that later, but yep, that is for controlling the ignition timing of the bike. So depending on what type of fuel management module you get, if it's just the fuel management module, it only connects to your throttle position sensor which is right behind this plate and connects to both your fuel injectors. And if you go with the ignition module as well, it will also connect into your ignition coil. So just piggyback, यानी आप इसका स्टॉक वायर निकाल के इसमें एक वायर और दूसरा वायर वापस ओरिजिनल कनेक्टर में लगा देते. So now let's move on to the software. So the software Powertronic uses, it's called the RTune Pro. So it's basically more or less the same with the most of the manufacturers. This is the main simple layout you'll be getting. You see this table right here with 00 values, that's basically the zero map, and these readings onto the left you see percentage, that is for the percentage of throttle opening, and ऊपर जो आपको ये ऊपर का टेबल दिख रहा, that is basically the different RPMs. So how exactly does a fuel management module control the air fuel ratio? That's it, you've seen it. हर RPM पे कितने परसेंट throttle पे स्टॉक एयर फ्यूल रेशियो में कितना पेट्रोल ऐड होना या कम होना, दैट इज इन परसेंटेजेस. सो इफ यू पुट 10 एनीवेयर इन द टेबल, दैट्स गोइंग टू बी 10%. सो लेट्स जस्ट गेट द मैप आई एम यूजिंग राइट नाउ. सो लेट मी जस्ट शो यू वन मोर रियली नाइस थिंग which I got along with the Powertronics. It's additional accessory, of course, you see it right there, M1 M2. So basically this switch here controls what map you use on the bike. So अगर दो maps है, एक for example highway use का है, एक city use का है, you can have it switching it on the fly with this switch right here, handle mounted. और जैसा आप ये करेंगे गाड़ी वो लैपटॉप के अंदर भी चेंज होगा. So now moving on to
दिस इटसेल्फ। तो इसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी रहते हैं, यहाँ छिड़कानी नहीं करना। तो बेसिक स्टफ इज दिस टेबल यू गाइस गॉट। सो अब तक आप लोग जो ग्राफ देखते हैं दैट इज़ बेसिकली हर आरपीएम पे कितने % थ्रॉटल पे कितना पेट्रोल जाना, उसके ग्राफ्स बनते। सो लेट्स गेट द मैप विच इज़ करेंटली इन माई बाइक। सो इफ आई जस्ट press receive here, that's it, I got the map. So you can see अब 7 बोले तो stock air fuel ratio में 7% पेट्रोल ज़्यादा जाएगा एट 5000 RPM। तो स्टॉक अगर 0% है तो स्टॉक से 7% ज़्यादा जाएगा। एंड माइनस में भी अगर गए आप तो -2 हो तो -2% हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। सो बेसिकली यू आर लीनिंग और मेकिंग द मिक्सचर लीन और रिच। दैट इज़ द साइंस बिहाइंड इट, लेकिन करने में फट जाती। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट अप द बाइक सो यू गाइज कैन क्विकली अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग वर्क्स। सो बिफोर वी स्टार्ट, अभी मैं थ्रॉटल फिरा रहा हूँ। यू गाइज कैन सी दैट रेड बार मूविंग अराउंड, दैट इज बेसिकली द बाइक इज स्टिल नॉट स्टार्टेड, सो इट्स रेड। और उन्हें अपने को 0 RPM के ऊपर ही थ्रॉटल ओपनिंग के रीडिंग्स बता रही। सो दिस इज़ वन थिंग आई लाइक अबाउट द पावरट्रॉनिक्स के let me just tell you the things I like about the Powertronic। अब जैसा ये है, this is not there in the Dynojet Power Commander module, या होंगे अंदर एडवांस्ड ऑप्शंस में होंगे वो इनेबल करने का, लंबी खींची होंगी। बट इन दिस इट्स प्री एनेबल्ड, सो ज़रा आसान हो जाता है। जस्ट इन केस यू आर नॉट डाइनो ट्यूनिंग द बाइक, आप अगर रोड पे ही ट्यून कर ले रहे तो इफ़ यू हैव अ टैब फोन माउंटेड ऑन योर टैंक बैग, यू कैन जस्ट चेक इन रियल टाइम कि आपके कितने थ्रॉटल ओपनिंग पे कहाँ पे रिच या लीन करना है आपको। सो यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज एक्टिव ओवर देयर। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट अप द बाइक। उसके बाद मेरी आवाज़ कितनी लाउड रहेगी। एवरीथिंग हियर हैज गॉन टू ओके ओके ओके। एंड अपने को सिलेंडर 1 में कितना इंजेक्टर प्रेशर है, सिलेंडर 2 में कितना है, all this is advanced stuff but you don't need to know, but yeah, RPM reading. So now you see currently 0% throttle पे कितना जा रहा। So if I rev it, can't talk with the bike started. So basically you've seen that thing move around. That is the graph you see in most of the dyno stuff. Yeah, it can be more advanced, I may be wrong because अब तक मैं dyno का मेरा कुछ experience नहीं हुआ, but yes, that is that. So if you're getting the bike tuned, so basically now comes the question कि आप गाड़ी ट्यून कैसा करेंगे। So there are 2 ways to get it tuned. आप या तो रोड मैपिंग कर सकते हैं विच इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड ज़रा अंधाधुन खेले छे एंड थोड़ा रिस्की छे वो, बिकॉज आप अंदाजे के हिसाब से वेर यू फील इट्स रिच, वेर यू फील इट्स लीन, यू कीप राइडिंग इट एंड हर RPM पे, हर थ्रॉटल ओपनिंग पे ज़रा रिस्की भी है वो, क्योंकि रनिंग में चेक करते रहना पड़ता है आपको। यू कीप मेकिंग दोस एडजस्टमेंट्स। द सेकेंड वे इज़ द बेस्ट वे to get the bike dynoed, and if you're getting it dynoed, most of the bikes have a secondary most of the bikes have a secondary air box kind of thingy जैसा इसके अंदर रहता है, it's called the AIS। तो you need to remove that AIS because AIS का काम है थोड़ी fresh air exhaust gases में फेंकना, that causes the popping with an aftermarket exhaust, but that is done basically to ensure that the gases coming out of the exhaust are not that polluting. So you know, like I said before, homologation के वास्ते, so you need to remove that। तो वो निकालने के बाद से they put quite a lot of sensors into your exhaust, they connect it to your O2 sensor, and हर RPM पे, हर throttle opening पे they check what gases are coming out, वो हिसाब से they can make out exactly कि कितने % rich है, कितने % lean है, and accordingly they make changes to the bike. And accordingly they make changes to the bike's fuel map. It's a time consuming process. The guys in Bangalore, अपने पास फिल वक्त, as far as I know, these guys, Race Dynamics in Bangalore is the only guy who's doing it. I may be wrong, और भी जने होंगे, but that's where you have a dyno, that's where you take your bike to get a dyno tested। तो कितना cost है, क्या है, वो सब के लिए like I said, I've given all the details in the डिस्क्रिप्शन, वो आप लान चेक कर ले सकते हैं। बट या कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग,
नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, नहीं, लॉट ऑफ पीपल थिंक के एक गाड़ी पे जो मैप काम करता दूसरी गाड़ी पे काम करता, नहीं, देयर इज क्वाइट लॉट ऑफ वेरिएशंस. एग्जॉस्ट फॉर एग्जांपल, एग्जॉस्ट का कॉस्ट है, यू सी एक्रपोविच का एग्जॉस्ट थोड़े डुकाटी उकाटी के लिए 2-3 लाख का है. दैट्स नॉट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दे आर टेकिंग द कॉस्ट ऑफ R&D ऑल्सो इन perspective. So basically when you're changing the airflow into or out of the engine, every little bend, every little angle, every little thickness of the pipe counts and makes a difference in the way air is coming in and going out of the engine and in the power delivery graph. तो हर एग्जॉस्ट और एयर फिल्टर के सेटअप के लिए there's a different map. So if you have, I have a good Sevak on my bike along with a, I still have the stock filter. I'm going for a DNA stage 2. उसके बाद I'll get a dynode. Currently I'm running the maps for the stock vehicle. Stock के चुनना थोड़े modifications करके they've given one highway and one city map. Okay चल रहा. I can notice a lot of difference, but I know कि once I get a dynode, it's going to be even more crazier. So yep, अब in case मेरी गाड़ी पे गुड़सेवक और इसका सेटअप है, आपकी गाड़ी पे भी उसका सेटअप है, तो मैं जो मैपिंग कराया वो मैप आप आपकी गाड़ी को फ्लैश कर सकते हैं. इफ़ यू हैव समथिंग डिफरेंट ऑन योर बाइक, लाइक इफ़ यू हैव से रेड रूस्टर, उसके ज़रा वेरिएबल्स अलग रहते, रिच या लीन, वो हिसाब से देखना पड़ता. सेम गोज़ फॉर इवन दीज बाइक्स. तो नाउ coming on to, if you compare the Powertronics and the Dynojet, ये दो काफ़ी सबसे फेमस है, तो that's what I'm gonna do. Let's start with what I like about the Powertronic. One, it's quite cost friendly. 22,000 का है for this bike, and for 22,000 you're getting the fuel management module, you're getting the ignition module as well, and there's also a connection for the quick shifter harness thingy. So you just get the quick shift sensor and everything, you connect it up, आप इसके अंदर जाके quick shifter configuration कर ले सकते. ज़्यादा खर्चा नहीं है, it's quite simple to use. Secondly, most important thing, they give you a very nice warranty. And they are based out of Bangalore, तो आपको ट्यूनिंग से लेके any help you need, anything, warranty, guarantee, हर चीज़ के लिए these guys are accessible to you in India itself. ठीक है? What I dislike about the Powertronic, number one, bro, too huge. So if you compare this to say a Dynojet का module, I currently don't have it on this one because it's still on the way. अभी आया नहीं, तो side by side compare करता था. The PC-FC as well as the PC-5, both of the modules are almost इसका आधे को आधा है dimensions और thickness में. So that's an important part for mounting it on your bike, especially when you don't have quite a lot of boot space. And इसके जो ignition actuators है, you see, for example, if you go with a Dynojet PC-5, you buy an ignition module separately, but that is also quite thin and slim and एक single piece है. But in this, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को ड्रॉबैक वही दिखा कि the fuel management module itself is so thick. At the same time, you have two ignition actuators for both the ignition coils. एक इधर छुपाया मैं और एक इधर अंदर छुपाया. So quite humongous. That's something I think Powertronics can work on while making their next generation. थोड़ा पुराना outdated feeling आ रही है इसमें. And then also this USB connection they use. अभी USB 3.0 का ज़माना आ गया, but they're still using this old firewire technology. ज़रा केबल घूम गया करा तो, प्लस लिंकिंग विंकिंग के लिए it's better if they go with USB 3.0 and some better infrastructure. But apart from that, the wiring harness की quality, ease of mounting, plug quality, everything is amazing. And for that price, 22,000 में, it's absolute steal of a deal. Now, moving on to Dynojet's Power Commander. इस पे है नहीं, but फिर भी मैं R1 बताते हुए बात करूँगा because इस पे लगने वाला है. The Dynojet is more compact. It's more initiative. The software updates, everything ज़्यादा better है because of course straight out of USA and quite commonly used. You have quite a lot of maps for the PC, for the Power Commander series, for the higher end bikes. Of course Powertronics takes it to the edge when it comes to KTM, Enfield and in-house bikes, but ज़रा बड़े गाड़ियों को जब जाते Power Commander is the more popular product, so you'll be finding quite a lot of maps and other stuff for that. And it's compact, it's all modern, micro USB वो पूरे ports आ गए उसमें, so cable का problem नहीं रहेगा अपने को, and it's quite easy to install. And yep, ज़रा more modern है, more advanced है. Disadvantages of Power Commander,
मेनली इंडिया में प्रॉपर कोई डीलर नहीं है जो प्रॉपरली इंपोर्ट करके प्रॉपरली आपको डाइनो पे टेस्ट वेस्ट करके, अब लाइक दीज गाइज पावरट्रॉनिक्स दे सेल यू, दे हैव अ डाइनो एज वेल, यू कैन गेट इट डाइनो ट्यून देयर, हर चीज़ आप कर ले सकते हैं। बट डाइनोजेट के प्रोडक्ट्स के लिए प्रॉपरली ऐसा कुछ इन हाउस डाइनो वाइनो अपने पास अभी आया नहीं। सो ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु इंपोर्टेड एंड सेल इट टू यू, बट गारंटी वारंटी एंड एवरीथिंग एल्स इज लिटिल बिट स्केची बिकॉज हर चीज़ यूएस से बेस्ड है, यहाँ पे उसका उतना कुछ सपोर्ट नहीं है। सो इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग या कुछ भी हेल्प होना, ईमेल पे लिंक्ड रहना इज योर ओनली बेट। एंड ऑफ कोर्स द कॉस्ट्स, अब वेरियस 22,000 इज द कॉस्ट ऑफ दिस थिंग, वो भी राइट हियर। When you're looking at the PCFC, USA में मंगाया था, it was close to 13,000 rupees, but that was without the customs duties, और कोई US में मेरे लिए ख़रीद के अनबॉक्स करके लगेज में डाल लेके ला लिए थे। So if you're gonna buy it from any place here, it's going to cost you upwards of 20,000, and for the upwards of 20,000 you're just getting the fuel management module, उसको आप कुछ modifications कर नहीं सकते apart from just changing the air fuel ratio. If you go with a PC5, that in the US itself it's quite expensive, एंड यहाँ से लेने गए तो फिर कस्टम्स ये वो सब लग के इट गोज़ इवन मोर एक्सपेंसिव। एंड उसके साथ अगर आपको इग्निशन मॉड्यूल लेना तो यू ऐड अ लॉट मोर मनी, एंड उसके साथ फिर क्विक शिफ्टर का सेंसर, शिफ्ट रॉड, ये वो पूरा, सो दैट गोज अप क्वाइट लॉट। सो या कॉस्ट वाइज काफ़ी एक्सपेंसिव है वो, एंड सपोर्ट और वो सब उतना बराबर नहीं है उसका। ऑफकोर्स यूल फाइंड क्वाइट लॉट ऑफ प्री फैब्रिकेटेड मैप्स ऑनलाइन फॉर दैट। अब जैसा तकरीबन जन टोस और एयर फिल्टर का सेटअप रन करते तो इट्स देयर ऑन देयर वेबसाइट, बट इन केस यू हैव अ मोर फैंसियर सेटअप एंड आपको एग्जैक्टली अब नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइज दैट कम्स इन टू प्ले इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड ambient air temperature. Most bikes have sensors for that built in to compensate, but ज़रा डाइनो मैपिंग में भी वो सब वेरिएबल्स भी काउंट करते हैं, बिकॉज हवा कितनी रिच है, लीन है, ऑक्सीजन कितना है, इट्स ऑल क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड साइंस। आई एम ट्राइंग टू ब्रेक इट डाउन फॉर यू गाइज। सो येस, ये थे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली विच वन शुड यू गो फॉर। भाई टोटली आपकी चॉइस है, मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों के बता दिया, बट आई पर्सनली स्टिक टू डाइनोजेट फॉर द बिगर बाइक्स, एंड आई एम हैप्पी विद पावरट्रॉनिक्स फॉर द इंटरसेप्टर। प्रॉब्ली नेक्स्ट अगर मैं कुछ इंडियन बाइक भी लिया तो I'll go with them, but only thing I wish they just make it more compact and a little bit more modern. So yeah, and do you need it on your bike? Yes, because over time if you're running aftermarket exhaust and aftermarket filters और वैसे आप गाड़ी चला रहे तो रिच या लीन रहने की वजह से काफ़ी चीज़ें ख़राब होते हैं। इट ओवर हीट्स, आपके वेल्व्स पे अननेसेसरी प्रेशर पड़ता, द इंजन इज़ नॉट रनिंग ऑप्टिमली। अब बेसिकली शॉर्ट क्या है बोले तो आप गाड़ी को रेड बुल पिला रहे लेकिन रेस में नहीं भगा रहे। सो यू नो बेकार का आप रेड बुल पिला रहे कहीं को, गाड़ी को पानी भी पिला सकते हैं आप। सो अगर आप रेड बुल पिला रहे तो गाड़ी को रेस में भी भगाओ, वहाँ आपको पूरा मज़ा मालूम होता। सो बेसिकली इट हेल्प्स you unlock all the full potential of the bike. Now racing use और road legal वो सब अपने पास इंडिया में भी उतने advanced laws आए नहीं, so you won't be in much of trouble for using race use products here on the road. I'm sorry to say that, but that's how it is. And that's about it. So hope you guys enjoyed the not so little informative video. लंबा है but I'm pretty sure you guys enjoyed it. So thanks for watching and bye bye.